اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کیے ہیں گروپ کے اندر۔ We are discussing the relation of the states to each other and relation. In our last lecture, we uh, discussed or looked at the Article 6 of the Constitution of the USA. Today we shall continue the same topic of discussion. Uh, the status of states in the American federal system. You can look in your book, the notes I shared. The fathers of the Constitution were keen to make states stronger than the center. Hence, residuary powers were given to the states in forming the union. In forming the union, the states surrendered only partial sovereignty. The 10th Amendment of the Constitution specifically provided that they continue to possess an undefined amount of residual authority. There is no denying the fact that the 13 states which joined the Union were sovereign states, but they agreed to surrender their sovereignty when they decide to constitute one state to that state. They, however, exercise those powers which have been left for them according to the Constitution. In other words, the states are free to exercise residuary powers without federal control. The states do not uh, possess the right of succession from the Union, though the Constitution is silent about it, since the southern states which attempted to secede failed miserably in an open conflict. Civil war it became an eye-opener for the member states that the Union itself was not able. The Supreme Court of the USA, also in Texas versus White, described the Union as an indestructible union composed of indestructible states. The states enjoy legal equality, though they vary in size and population. The federal government also owns the same obligation towards these states. This legal equality is evident from the fact that each state has been uh, accorded equal representation in the Senate. The Constitution clearly specified this provision cannot be changed by amendment. The status of states in the American federal system पहले हमने डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन स्टेट्स यानी कहने के रिलेशन ऑफ स्टेट्स अब फिर हमने डिवीजन ऑफ पावर्स उसको भी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि स्टेट्स का विद इन फेडरल सिस्टम स्टेटस क्या है। The framers of the Constitution, they were interested to make states more powerful than center. That's why the framers of the Constitution uh, specified certain powers uh, uh, which were granted by the framers of the Constitution to the center, and they mentioned the same powers in the Constitution. Remaining powers
you can say the residuary powers were left with states. You can imagine کہ جو اسٹیٹ سینٹر کو فیڈرل گورنمنٹ کو جو پاورز کانسٹیٹیوشن کے اندر گرانٹ کی گئی ہے ان آرٹیکل 1 وہ مینشن ہے اسپیسیفائڈ ہے اور باقی ساری ریمیننگ پاورز جو ہیں they are left with states and people respectively according to amendment number 10. تو جو ان کو ریزرو پاورز بھی کہتے ہیں جو پیپل کو دی گئی ہیں اور باقی جو ہیں ریزیڈیوری پاورز جو ہیں یہ آر ویسٹ ود اسٹیٹس. آپ فار ایگزامپل آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں آپ کو یہ اس ادارے کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس فلاں جو اختیارات پاورز ہیں آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اسی ادارے کے اندر کوئی ڈائریکٹر ہے یا کوئی ڈپٹی ہے یا کوئی تو اس کے بارے میں اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی پاورز کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے اٹ مینس کہ ریمیننگ جتنی پاورز ہیں وہ ان کو یوز کرے گا جسٹ لائک ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں دے آر اسپیسیفکلی مینشنڈ ان آرٹیکل 1 but remaining powers are granted to the states or you can say the residuary powers are vested with the states. تو ان کو پھر آپ امینڈمنٹ نمبر جو 10 ہے اس کے مطابق یہ جو ریمیننگ پاورز جو ہیں یعنی جو پاورز فیڈرل گورنمنٹ کو گرانٹ کر دی گئی ہیں مینشن کر دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کے علاوہ جتنی پاورز ہیں دے آر انڈیفائنڈ. تو انڈیفائنڈ ریزیڈیوری پاورز آر گرانٹیڈ ٹو اسٹیٹس آر ویسٹڈ ود دی اسٹیٹس. تو پھر اکارڈنگ ٹو دی آتھر کہ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب 13 states initially when the 13 states joined to become a single state that is called USA, they surrender their sovereignty in favor of the USA. تو جب یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ملک بنا اس وقت انیشلی 13 اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے اتحاد کیا وہ انہوں نے آپس میں مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اپنی اپنی جو ساورٹی ہے اس کو سرنڈر کرتے ہیں ان فیور آف ون اسٹیٹ دیٹ از کالڈ یو ایس اے. یعنی ایک اس کو پھر ایک ملک بنا دیا. جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں جو ساورن اسٹیٹس تھیں 13 انہوں نے اپنی ساورٹی اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو سرنڈر کر دیا لوز کر دیا ان فیور آف یو ایس اے ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک ملک بنانے کے لیے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں جو پاورز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بچ گئی ہیں جو پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو بچ گئی ہیں وہ انڈیفائنڈ ہیں اور وہ ساری اسٹیٹس کے پاس ہیں اور وہ اسٹیٹس ان کو ایکسرسائز کرتا ہے وداؤٹ کنٹرول آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اس کے بعد اسٹیٹس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ ملک جو ہے ڈکلیئر کر دیں علیحدہ ہو جائے الگ ہو جائے سیپریٹ ہو جائے یو ایس اے سے. ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو پھر یہ جو سدرن اسٹیٹس ہیں انہوں نے سول وار کے تھرو ان ہسٹری آپ اگر پڑھیں گے تو دے ٹرائی ٹو separate themselves from
the Union of United States of America, but they failed miserably in an open conflict that is called Civil War. It became an eye-opener for the member states that the union is indissolvable. यानी जब वो सिविल वार जो है वो फेल हो गई, अलहदगी की एक तहरीक जो थी वो फेल हो गई, उसके बाद इस चीज़ ने दैट बिकेम आई ओपनर, यानी उसने आंखें खोली बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी भी, कि ये यूनियन जो है ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये इंडिज़ॉल्व नहीं हो सकती, इससे कोई स्टेट जो है वो अलहदा नहीं हो सकती. The Supreme Court of USA also in Texas versus White 1869 described the union as an indestructible union composed of indestructible states. यानी टेक्सास वर्सेस वाइट केस 1869 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर ये चीज़ जो है ड्रॉ कर दी, हेल्ड कर दी या डिसाइड कर दी कि ये जो यूनियन है दैट इज इनडिस्टेबल, यानी इसको ये टूटने वाली नहीं है, ये यूनियन टूट नहीं सकती. जैसे आप अगर टीवी पे देखते हैं सुनते हैं आजकल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये अक्सर आप सुनेंगे कि इंडिया का जो मोदी सरकार है इसकी वजह से इंडिया टूट जाएगा, उसकी पॉलिसियों की वजह से इंडिया टूट जाएगा. इंडिया टूट जाएगा मीन कि इंडिया के जो सूबे हैं उसकी रियासतें हैं वो अपना अपना एक अलग मुल्क का ऐलान कर दें तो इंडिया टूट जाएगा. इसी तरह जो यूएसए के अंदर जो स्टेट्स हैं तो उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को सेपरेट कर लें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले के अंदर डिसाइड किया कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क की जो यूनियन है 50 स्टेट्स की, दैट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, ना टूटने वाली यूनियन है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी ना टूटने वाली स्टेट्स से बनी हुई यूनियन जो है दैट इज आल्सो इंडिस्ट्रक्टेबल, ना टूटने वाली यूनियन है, और जो ना टूटने वाली स्टेट्स का एक मजमूआ है, यूनियन है. The states enjoy legal equality, though they vary in size and population. The federal government also owes the same obligation towards these states. The legal equality is evident from the fact that each state has been accorded equal representation in Senate. The Constitution clearly specified that this provision cannot be changed by amendment. So, in the eyes of law, the states are equal. These states are equal irrespective of their size, of population size, and irrespective of their size area wise. यानी अगर कोई स्टेट एरिया में बड़ी है या कोई स्टेट जो है उसकी आबादी ज्यादा है, इस चीज से कता नजर ऑल स्टेट्स आर इक्वल. तो इस चीज को जो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स है ये आपको सेनेट के अंदर जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे आपको नजर आएगी कि सेनेट बीइंग द पार्ट ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर कांग्रेस एंड सबसे जो अपर हाउस है उसके अंदर सारी स्टेट्स जो है all 50 states have equal representation. All states send 2 senators from each state irrespective of their population size and their area size and area wise size कि वो जियोग्राफिकली वो कितनी बड़ी स्टेट है या पॉपुलेशन उसकी कितनी ज्यादा है या उस पॉपुलेशन कम है या उसका एरिया कम है, जियोग्राफिकली एक छोटी स्टेट है. इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ
جو جس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے ایکویلٹی آف اسٹیٹس، اور اسی بنیاد پہ اسٹیٹس جو ہیں اپنے سینیٹر، ہر اسٹیٹ 2 سینیٹر وہ سینٹ کے اندر الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دی اسٹیٹس آر ایکول ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو جو لیگل اکوالٹی ہے اسٹیٹس کی، تو جو فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی یہی چیز وہ کرتی ہے، انڈر اوبلیگیشن ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، ایڈمٹ کرے کہ اسٹیٹس کا جو اسٹیٹس ہے دے آر ایکول. تو وہ اسٹیٹس کے ساتھ یعنی انڈسکریمنیشن کا ایٹیٹیوڈ یا بہیو نہیں کر سکتے. Federal guarantees of the states. In order to strengthen the position of the states in the federal system, the Constitution imposes certain obligations on the federal government, that is, respect for their territorial integrity, guarantee of a republican form of government, and protection against invasion and domestic violence. A brief explanation of these guarantees would not be out of place. تو فیڈرل سسٹم کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان کی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن نے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سرٹن اوبلیگیشن امپوز کی ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ذمے کہ آپ نے جو گارنٹی کرنا ہے کہ رسپیکٹ فار دیئر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. The federal government is under obligation to respect the territorial integrity of the states, and federal government is under obligation to give guarantee of a republican form of government in each state, and federal government is under obligation to give guarantee that each state has been that the federal government is under obligation to provide protection against invasion and domestic violence. So we shall discuss in detail these guarantees uh, provided by the federal government to the states. The first one is respect for territorial integrity. The federal government has been required to respect territorial integrity of the states. No state can be made to lose its territory save by its own consent. In other words, no new states can be carved out of the existing states unless the legislatures of the states affected accord their approval. یعنی فیڈرل گورنمنٹ آن ہز اون اپنے بہاف پہ اسٹیٹس کے اندر نئی اسٹیٹس قائم نہیں کر سکتی unless they obtain the consent of the that states legislature. اگر یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹس کا جو ٹیریٹوریل ان کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی اسٹیٹ کے اندر کوئی نئی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ جو اس اسٹیٹ کا لیجسلیچر ہے اس کی کنسنٹ لے گی اور اس کے بعد کنسنٹ لے گی کانگریس کی. ادروائز فیڈرل گورنمنٹ از انیبل ٹو carve out a new state from an existing state.
guarantee of a republican form of government. The federal government guarantees to every state a republican form of government. However, the Constitution has not elucidated the word republican, hence, it has been subjected to varied interpretation. The Supreme Court has refused to pronounce its judgments on the matter, which is political rather than constitutional or judicial. The President or the Congress also can give their interpretations. तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इस चीज़ की गारंटी देगी कि हर स्टेट के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ के बारे में साइलेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू विल नॉट फाइंड सिंगल वर्ड. एक सेकंड यार. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के सेक्शन 4 के अंदर ये किया गया है. तो इसको जो डिफाइन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी डेफिनेशन करवाने के लिए लोग जो हैं केसेस लेके जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जो है इस चीज़ पे कोई आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दी कि व्हाट इज़ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ये कह के रिफ्यूज़ कर देती है कि दिस इज़ अ political nature question, and we cannot we cannot pronounce a judgment on political cases. Protection against invasion and civil commotion. The Constitution enjoins upon the federal government to protect each of the states against invasion, and on the application of the legislature or of the executive against domestic violence in case of invasion. The federal government intervenes without awaiting request from the state concerned. Such federal power flows from the federal war power for quelling domestic insurrection. The federal government intervenes only when the state authorities make a request to the central government or federal laws are violated or national property is endangered. The decisions regarding federal intervention rest entirely with the American president. For instance, in 1914, President Franklin D. Roosevelt sent troops to crush a strike in Californian aircraft factory, though the state government made no such request. फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ की भी गारंटी देगी कि जो स्टेट्स हैं उनको बैरूनी हमले से जो है तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोटेक्शन स्टेट्स की फेडरल गवर्नमेंट करेगी. इन केस ऑफ इन्वेजन यानी बाहर से जब हमला होगा, the federal government is not required any request from the state government to intervene in their state in case of invasion. बाहर से जब हमला होगा तो फेडरल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिक्वेस्ट भेजें कि आप हमारे स्टेट के अंदर आए और हमें बैरूनी हमले से तहफ़्फ़ुज़ दें. ऐसा नहीं है. तो ये चीज़ जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम वार पावर, और उसके बाद जब डोमेस्टिक इंसर्केशन होगी या डोमेस्टिक वायलेंस होगा, इंटरनल रिवॉल्ट होगा, then the federal government intervenes only when
The state authorities make a request to the central government or federal laws are violated or national property is in danger. तो इंटरनल रिवॉर्ड अंदरूनी बगावत खाना जंगी की सूरत में जिस स्टेट के अंदर खाना जंगी है बगावत है उस स्टेट की जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी सॉरी उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऑन रिसेस है तो एग्जेक्टिव रिक्वेस्ट भेजेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमारी स्टेट के अंदर इंटरवीन करें हमारे जो कह लें कि बस की बात नहीं है कि हम हालात को काबू कर सकते हैं जस्ट लाइक इन पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर भी सूबे जब अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार नहीं रख सकते तो वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप आर्मी भेज दें या रेंजर भेज दें जैसे आजकल कराची के अंदर रेंजर तैनात है तो इस चीज से ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज की गारंटी देगी कि हम आप स्टेट्स जो हैं उनकी हिफाजत करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे बैरूनी हमले की सूरत में विदाउट देयर रिक्वेस्ट लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर बगावत है कोई अंदरूनी खाना जंगी है उस सूरत में जब तक स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट की एग्जेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ना करे कि आप आर्मी भेज दें ट्रूप्स भेज दें वो नहीं भेज सकते क्योंकि इस चीज़ का जो फैसला है कि ट्रूप्स भेजने हैं या नहीं भेजने ये प्रेसिडेंट ने करना होता है तो हिस्ट्री के अंदर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है उन्होंने 1914 के अंदर एक कैलिफोर्निया के अंदर जो कैलिफोर्नियन फैक्ट्री में जब वहाँ पे स्ट्राइक हो रही थी उसको क्रश करने के लिए ट्रूप्स भेज दिए थे विदाउट वेस्ट ऑफ कैलिफोर्नियन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट ये ऊपर हमने 3 गारंटीज पढ़ ली हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई हैं स्टेट्स को या आप कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं रिलेटिंग टू स्टेट्स इन यूनियन वो हमने डिस्कस की हैं दे आर 3 इन नंबर तो अब उसके बाद है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट The states also owe certain obligations towards the federal government. The states are required to conduct elections to federal offices as the Constitution does not make provision for a separate federal election unity. The members of the Electoral College are elected in each state in a manner prescribed by the state legislature. The senators are also elected directly in the state. The members of the lower house of the Congress are elected in each state, generally in single-member constituencies. Further, the states can make initiative in preparing an amendment of the Constitution. Their participation is essential for ratifying the proposed amendment as well. तो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे जो काम है फेडरल गवर्नमेंट ने जो गारंटीज स्टेट्स को देनी है वो आपको बता दी है पहले अब जो जिम्मेदारी है स्टेट्स की टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट वो ये है कि स्टेट्स जो हैं दे आर अंडर ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन देयर स्टेट्स because in United States of America there is no authority there is no department like our Pakistan election commission जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाता है उसका जिम्मेदार अदारा है ऐसा अदारा यूएसए के अंदर मौजूद नहीं है लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट के जितने इलेक्शन हैं प्रेसिडेंट का सेनेट के इलेक्शन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन जो है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर अपने रूल्स बना के वो कंडक्ट करवाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है दैट इज देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट
اس کے بعد اسٹیٹس جو ہیں دے کین انیشیٹ اینی امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. یعنی کوئی اسٹیٹ جو ہے یہ پرپوزل دے دے کہ ہم یہ امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ امینڈمنٹ کے اوپر کام کریں گے اور اس کو ریٹیفائی کروانے کے لیے جو ہے کوشش کریں گے. اور یہ جو امینڈمنٹ ہے وہ کس میں ہوگی, وہ کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے میں ہوگی, لیکن اس کا انیشیٹو کون لے رہا ہے, اسٹیٹ لے رہی ہے, اور اسٹیٹ نے ہی پرپوز کیا ہے, اور اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنے اسٹیٹ لیجسلیچر کے اندر ریٹیفائی کروا کے پاس کروا کے اور دوسری اسٹیٹس کو بھیجے گی, اور پھر ٹوٹل 34 یعنی 1/5 کتنا ہے, 3/4 اسٹیٹ جب اس کو ریٹیفائی کر دیں گے پرپوزل کو یا ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر کانگریس میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسٹیٹ نے جو پرپوز کی امینڈمنٹ وہ 34 اسٹیٹس جو ہیں ان کو ریٹیفائی کریں گے, اور اس کے بعد کانگریس کے اندر اس کی ریٹیفیکیشن ہوگی تو وہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گا. تو انیشیٹو کون لے رہا ہے, اسٹیٹ لے رہی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ختم ہو گیا ہے. آج ابھی آپ کا ریگارڈنگ today's topic, if you have any question you can unmute yourself and can ask me question. Any question? ہاں جی, محمد عباس رضا صاحب آپ کا کیا کوشچن ہے, آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو, کوشچن پوچھ لیں. جی ہیلو ہیلو عباس رضا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. Any other question? جنید صاحب آپ کا کوئی کوشچن؟ اللہ حافظ کر دیں پھر کلاس. نو سر. اچھا نو, ختم کریں ہاں کلاس. سر. جی سر, وہ اگلے لیکچر کا بھی سر ٹائم آ گیا ہے, ان کا لنک آ گیا. یار 4 بجے شروع ہونی ہے, ابھی 4-5 منٹ رہتے ہیں. جی وہی سر, تھوڑا پانی شانی پی لیں گے نا سر. پڑھیا میں وا تو پانی تھی پی چلے, چلو مرضی ہے. انہیں بھی سر پلا دیں گے, یونیورسٹی اوپن ہو لیں دو. ٹھیک ہے.